Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start with our second lecture, that is about approaches of total quality and cost of quality. Let me share my screen. Wait a minute. Should close all the things. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture, that is about approaches of total quality and cost of quality. Uh, these are the contents of the lecture. Actually, I will divide this lecture into three. So we will cover from this portion approaches of total quality management, and in this lecture we will go till Ishikawa philosophy. Then I will record another lecture that will start from frame of quality and performance excellence, and we will cover till seven principle by Gerald Smith. And then last lecture will be about international quality award programs. So let's start with our first part of this lecture. The objective of this lecture is that you will understand different approaches of total quality management. You will know the importance of framework for quality and performance excellence. You will be able to understand the principle of total quality management. You will be familiar with concept of quality cost, and at last you will know about some international quality award programs. So let's start with approaches of total quality management. So total quality management is mainly concerned with continuous improvement in all work and functional activities of an organization. And as you know that it is a long-term planning and consistent improvement in the quality is required in total quality management. This total quality management is a never-ending process, and it describes management approaches to long-term success through customer satisfaction. So basically, TQM is all about the circle of TQM is revolving about the customer satisfaction. In TQM, the efforts of all member of the efforts of all member of organizations are involved in order to improve the process, product, and services, and creating a culture in which they work. So, the success of TQM depends on the significant change in the organization design, work process, and culture. There are various approaches to TQM because some organizations give importance to the use of quality programs like statistical process control, some give importance to a tool like quality function deployment, and some organizations fail to realize the importance of quality improvement because of the lack of holistic understanding of quality tools or concept. So अगर आप देखें तो हमने कहा था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है विच इन्वॉल्व ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम मैनेजमेंट, ठीक है ना. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं कि वो सिर्फ एक अप्रोच को यूज करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिजाइन प्रोसेस और जो इनको देखती हैं, ठीक है ना. कुछ जो है वो स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को यूज करती हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ जो है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट्स को, ठीक है ना. लेकिन इन इन सब चीजों को कंबाइन करके ही एक जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, ठीक है. सो total quality management is again a comprehensive and structured approach to organization
to organizational management that seeks to improve the quality of product and process through ongoing refinement in response to continuous feedback. उनको continuous feedback आता है, ठीक है ना, कस्टमर से, और based on this continuous feedback they are going to refine their product or processes or services. So TQM TQM can be applied to any type of organization. It is originating in manufacturing sector and has since been adopted for use in almost every type of organization imaginable, including school, highways, maintenance, hotel, etc. सो ये टीक्यूएम जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं in order to meet the customer needs. So total quality management is a management approach for organizations, and it's centered on quality based on the participation and commitment of all internal and external customer, and aiming at strategically long-term success through customer satisfaction. The benefit, it will benefit to all member of the organization and society as well. How? Because it uses strategy, data, and effective communication to integrate the quality discipline into culture and activities of the organization. So some organization adopt a problem solving focus. अब ये वो points हैं कि देखिए कुछ organization जो है वो problem solving पे focus करते हैं, ठीक है ना, and concentrate on production as well as customer service process. They adopt quality circle and team approaches, while some organization concentrate on error prevention. ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं, कुछ जो है वो फोकस करते हैं एरर प्रिवेंशन पे, क्योंकि वो कहते हैं अगर एरर नहीं होगा तो जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट आएगी. सो सम ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन एरर प्रिवेंशन थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. Most of the successful companies have adopted unique approaches, that is of total quality management. ठीक है ना, अब जो यूनिक अप्रोच है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की है, और इसके मुताबिक क्या है, and according to that their own requirement, because one approach is suitable for one organization may not be suitable for another organization. So hence the concept of total quality management should be implemented. And how it is not suitable for how it is not suitable for an organization to adopt one approach and not to adopt another approach. The reason is that they may have different culture. Every organization have different culture, and total quality management may require a set of guiding principle and concept. So the overall world famous quality guru like Edward Deming, Joran, Crosby, Phillips Bay, Crosby, Ishikawa, as well as many other have made substantial contribution to theory and practice of quality management. We will discuss each of their philosophy in our next slides. So let's start with Edward Deming philosophy. So William Edward Deming, that was the era started from 1900 to 1993. He was an American engineer, statistician, professor, and lecturer in and management consultant. He developed some sampling technique which are still used by the US Department of Census and Bureau of लेबर स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, तो एडवर्ड डेमिंग जो है उन्होंने जो है शिवॉल्ड साइकिल जो है उस पर काम किया था. वो शिवॉल्ड से actually he was very impressed, and he then carried out his ideas and concept and developed a cycle that is known as PDSA cycle. PDSA means P means plan, D means do, S means study, and act mean act. Okay, so the Deming called PDSA as Sheward cycles. The Deming taught
statistical process control to Japanese engineer and manager, and message was very clear that improvement in quality will reduce expenses while productivity and market share can be increased. Deming is also well known for his 14 point for quality and his system thought that is called system of profound knowledge. Now what does system of profound knowledge means? That this system of profound knowledge consists of four parts. The first one is appreciation of the system, that you must appreciate a system for improvements. Knowledge of variation, you must have knowledge for variation, that how the system is going to variate, or the data that you are taking from during the production process, you must be able to know that which type of variation is going on. The third one is theory of knowledge, that you must have knowledge about your required course or your required field. The last one is knowledge of psychology. So you must know about psychology of the system, that what is going on and what is happening. He stressed that the system of profound knowledge is very important because it helps the manager to transform within their organization, which improves the outcome in the form of quality. The Deming 14 points for management. Let's discuss these 14 points. These are very important points. The first one is create and publish the aim and purpose of the organization. So अब इससे क्या मतलब है कि आप एक ऐसे अपने पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस या एम क्रिएट करें जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट हो. Management must demonstrate constantly their commitment to this statement. It must include investor, customer, supplier, employers, the community, and quality philosophy. This statement is forever changing document that requires input from everyone. क्योंकि ये जो documents है, ये जितने भी हैं, investors हैं, customers हैं, suppliers हैं, इनसे every stage पे you get the inputs. So the statement is for changing documents that can be changed with the passage of time. Organization must develop a long-term view of the last 10 years and plan to stay in business by setting long range goals. So you must have a long term goals or plans, and you must be able to stay in the business. For that you must have a long term plan. Resources must be allocated for research, training, and continuing education to achieve this goal. Innovation is promoted to ensure that product or service does not become absolute. So this strategy can be obtained by a family organizational philosophy that must be developed to send the message that everyone is the part of organization. The second one is learn the new philosophy. So learn the new philosophy से means के जो है वो top management को जो है वो हर वक्त जो है the top management must learn the new philosophy, because organization must seek never ending improvement and refuse to accept non-conformance. Customer satisfaction is the number one priority, because dissatisfied customer will not continue to purchase non-conforming product and services. The organization must concentrate on defect prevention rather than defect detection. So every time he must ready to adopt a new philosophy. He must be in position to accept the new technologies or new things that must be learned, and in order to continue to meet the customer need. The third one is understand the purpose of inspection. So in this point, Edward Deming described that management must understand the purpose of inspection is to improve the process and reduce its cost. Its purpose is not
टू इसका इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पर्पस जो है इंस्पेक्शन का, उसका मकसद नहीं है कि आप अपने जो है स्टाफ पे जो है वो नजर रखें कि वो काम चोरी करते हैं कि नहीं. द ओनली पर्पस इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड रिड्यूस इट्स कॉस्ट. For most part, mass inspection is costly and unreliable. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो मास इंस्पेक्शंस हैं, ठीक है ना, हैवी मिकदार में हर एक पार्ट को तो नहीं चेक किया जा सकता, ठीक है ना. तो डैमिंग कहते हैं कि आप मास इंस्पेक्शन को जो है वो हटा दें और उसकी जगह आप जो है वो कुछ सर्टन क्विक जो है वो आप रेंडमली पार्ट सिलेक्ट करें और उनकी इंस्पेक्शन करें. अगर वो इंस्पेक्शन के मेयार के मुताबिक ठीक निकलते हैं तो देन इट्स ओके. Okay, statistical evidence is required of self and suppliers. Every effort should be made to reduce and eliminate accepting samples. Mass inspection is managing for failure and defect prevention is managing for success. The fourth one is stop awarding business on price elan. Okay, so आप जो है the organization must stop awarding business based on low bids because price has no meaning without क्वालिटी. तो हमेशा जो है वो हम हमारे यहाँ पे भी इस तरह है कि हम हमेशा जब बिजनेस करते हैं तो जो बिड्स होती हैं उसमें हम फिर लोअर बिड्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना. तो लोअर बिड्स की जो सिलेक्शन होती है तो वो उसमें जो है वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी, इस तरह के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं कि वो क्वालिटी को मीट नहीं करते. सो द गोल इज टू हैव सिंगल सप्लायर फॉर ईच आइटम to develop a long-term relationship of loyalty and trust and thereby providing improved product and services. तो लोअर बिड्स को उसका कल्चर खत्म करें, ठीक है ना, और एक ही सप्लायर के साथ रिलेशनशिप रखें ताकि वो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परफॉर्म कर सके. The fifth one is improve constantly and forever the system. तो हमेशा अपने systems को जो है वो improve करने की कोशिश रखें, ठीक है ना. So management must take responsibility for problem by actively finding and correcting problem so that quality and productivity are continually and permanently improved and costs are reduced. The sixth one is institute training. So each employee must be oriented to the organization's philosophy of commitment to never ending improvement. ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय की कोशिश भी होती है, उनको इस तरह सिखाया भी जाता है कि आपका बेसिक मकसद ये है कि आप क्वालिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव करें, क्योंकि दैट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू ट्रेन एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर जॉब इन बेस्ट manner possible. Everyone should be trained in statistical method and these methods should be used to monitor the need for further training. The seventh one is teach and institute leadership. Okay, improving supervision is management's responsibility. That they must provide supervisor with training in statistical method and these 14 points so the new philosophy can be implemented. Instead of focusing on a negative fault finding atmosphere, supervisor should create a positive, supportive one where pride in workmanship can be flourish. सो आपने टीच करना है उनको लीडरशिप को भी कि आप किस तरह जो है वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं. आप उनको स्टेटिस्टिकल मेथड समझाएं, उनको ट्रेन करें उस पे कि वो किस तरह अपनी जो है वो डिफेक्ट्स को कम से कम रखें और क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद दे. ड्राइव आउट फेयर, create trust and create climate for innovation. So this is the 8th point of Deming said that you must drive out the fear from your employees. You must create a trust on them and create a climate for innovation. Management must encourage open, effective communication and teamwork. Fear is generally caused by feeling of being powerless to control the important aspect of one's life. It is caused by a lack of job security, possible physical harm, performance appraisal, ignorance of organization goal, poor supervision, and not knowing the job. So driving fear out of the workplace involve managing for success. Management can
began by providing worker with adequate training, good supervision, and proper tool to do the job, as well as removing physical dangers. When people are treated with dignity, fear can be eliminated, and people will work for general good of the organization. In this way or in this climate, they will provide idea for improvement and will lead to innovations. The 8 point of the Deming discuss that optimize the effort of team, groups, and staff area. So, how management will optimize the efforts of team, group, and staff areas? That management must optimize the efforts of team, area, and stop was to achieve the aim and purpose of the organization. Barrier exists internally among level of management, among department, within department, and among shift. Externally, they exist between the organization and its customers and supplier. These barrier exist the cause of poor communication, ignorance of organization's mission, competition fear, and personal grudges or jealousies. To break down these barrier, management will need a long-term perspective. All the different area must work together. Attitude should needs to be changed. Communication channel must be open. Project team organized and training in teamwork must be implemented. This will help to optimize the effort of team, group, and staff areas. The 10th point of Edward Deming is eliminate exhortation for the workforce. Exhortations that ask for increased productivity without providing specific improvement method and can handicap an organization. मतलब ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर से कहें कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें और उसको आप कोई स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट मेथड्स भी ना बताएं, ट्रेनिंग भी ना दें, ठीक है ना, तो वो जाहिर है आप जब ट्रेनिंग नहीं देते, कुछ उसको इम्प्रूवमेंट के तरीके नहीं सिखाते और उससे आप प्रोडक्टिविटी मांग रहे हैं या इंक्रीज इन प्रोडक्टिव मांग रहे हैं, तो वो इंसान को थका देती है, वो इंसान को मायूस कर देती है और इसी वजह से द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हैंडीकैप्ड. They do nothing but express management desired. They do not produce a better product or services because the works are limited by the system. So goals should be set that are achievable and committed to long-term success of the organization. The 11th point is that eliminate numerical quota for the workforce. So instead of quotas, management must learn and institute methods for improvement. Quotas and work standard focus on quantity rather than क्वालिटी. ठीक है ना, तो आप कोटा वाला सिस्टम हटा दें कि हमने इतने जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक दिन में, एक हफ्ते में या एक साल में, क्योंकि अगर कोटे की बात जहां पे आती है तो वो फिर क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन क्वालिटी. सो दे encourage poor workmanship in order to meet their quotas. Quotas should be replaced with the statistical method of process control, and management must provide and implement a strategy for never ending improvement and work with the workforce to reflect the new policies. Eliminate management by objective. Instead of management by objective, management must learn the capability of process and how to improve them. Internal goals are set by the management without methods or burlesque. Management by numerical goals is an attempt to manage without knowledge of what to do. An excellent analysis supporting this point is given by Castellino and Rohem, that is described in their theory. The 12th point of Deming philosophy is that remove barrier that robs people of pride of workship. So आपने वो बैरियर्स रिमूव करने हैं जो कि उस जो एम्प्लॉयर्स है उसका जो है वो प्राइड जो है वो रॉब करे, ठीक है ना. सो लॉज ऑफ प्राइड इन वर्कमैनशिप एग्जिस्ट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जिस्ट करती है. तो वर्कर डू नॉट नो हाउ टू रिलेट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन. दे आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर सिस्टम प्रॉब्लम्स, ठीक है. पुअर डिजाइन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ जंक. Inadequate training is provided.
and punitive supervision exist. Inadequate or ineffective equipment is provided for performing the required workload. So आपने इस तरह की बैरियर हटानी है ताकि जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो आजाद माहौल में काम कर सके और जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके. The 13th point of Deming is encourage education and self-improvement for everyone. So, in your organization, you must encourage the education and self-employment for everyone. What an organization need is people who are improving with education. A long-term commitment to continuously train and educate people must be made by the management. And the last point is take action to accomplish the transformations. कि आप जितने भी improvements आए हैं उस पे आप action लें in order to get your desired goal. Management has to accept the primary responsibility for never-ending improvement of the process. It has to create a corporate structure to implement the new philosophy. A cultural change is required for previous business as usual attitude. So management must be committed, involved, and accessible if the organization is to succeed in implementing the new philosophy. So that was all about the Deming philosophy. It's 14 points. Now we will move to Juran philosophy. So, Juran was basically an industrial engineer. He joined Western Electric in 1920. He authored many books, but the Quality Control Handbook, which is often referred to as Quality Bible, is authored by him. Juran proposed a simple definition of quality that we discussed earlier, and the definition of quality, according to Juran, is fitness to use. This definition of quality suggests that it should be viewed from both external and internal perspective. That is quality related to प्रोडक्ट परफॉर्मेंस दैट रिजल्ट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है ना, कि प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रिलेटेड है. अगर वो परफॉर्मेंस जो है वो कस्टमर सेटिस्फाइड, जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है, सो दैट इज नोन एज क्वालिटी. और द फ्रीडम फ्रॉम प्रोडक्ट डिफिशियंसीज विच अवॉइड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, या कि उस प्रोडक्ट में जो है कुछ भी डिफिशियंसीज ना हो. अगर जाहिर है अगर डिफिशियंसी नहीं होगी तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा. He believed that quality improvement should be achieved through project, and he revolutionized the quality philosophy on quality management. Dr. Juran was the first to incorporate the human aspect of quality management, which is referred to total quality management. Actually, Dr. Juran focused on three major quality processes that is known as Juran's quality trilogy. Now, what is trilogy? Juran quality trilogy. According to Juran, quality process are summed up by trilogy. That means that the management of quality consists of three interrelated quality-oriented processes. And these are, the first one is quality planning, the second is quality control, and the third one is quality improvement. जिस तरह कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि द फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी प्लानिंग, कि आप क्वालिटी प्लानिंग किस तरह करते हैं. क्वालिटी प्लानिंग के लिए जो है आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है. यू मस्ट आइडेंटिफाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, कस्टमर में आपके पास इंटरनल कस्टमर भी आते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर भी आते हैं. तो बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और मार्केट रिसर्च, उसके मुताबिक आप जो है वो देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और कस्टमर को क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी जो जितने भी डिजाइन के प्रोसेस हैं उस पे काम करते हैं. जाहिर है आपकी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप यूजफुल प्रोडक्ट में लाने के लिए डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन में भी वो सारी नीड्स आप आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, फिर आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें भी आप उसको
को लाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो डिज़ाइंस अचीव होते हैं। तो ये सारे के सारी जो है वो आप एक क्वालिटी प्लानिंग करते हैं। जब वो आपकी सारी प्लानिंग हो जाती है और आप प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, देन इन दैट यू हैव टू कंट्रोल द क्वालिटी, जिसके लिए आपके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू, ठीक है ना। और आपने ज़ाहिर है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कंट्रोल द डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, ठीक है ना। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो जब आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, वो प्रोडक्ट्स फिर जाहिर है लोग यूज करते हैं, एंड देन आप अगेन यू गेट द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना, कि उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या वो कस्टमर की नीड को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट डेटा यू अगेन गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन टर्म ऑफ योर प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है ना। सो एक्चुअली दिस इज सॉर्ट ऑफ ट्रायोलॉजी, एक ट्रायंगल है। अगर आप देखें तो उसके एक कॉर्नर पे क्वालिटी प्लानिंग है, सेकंड पे क्वालिटी कंट्रोल है एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, और उसी ट्रायंगल के दरमियान जो है वो एक साइकिल मूव हो रही है और उसका बेसिक एम ये है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी। जुरॉन 10 पॉइंट फॉर मैनेजमेंट, जुरॉन ने भी जो है वो मैनेजमेंट के लिए 10 पॉइंट्स जो है सजेस्ट किए हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द quality. We will discuss them each briefly. The Juran has given 10 points for quality improvement. The first one is that build awareness of need and opportunity for improvement to realize that all processes are improvable, ठीक है ना। तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, और ये रियलाइज कराना है अपने एम्प्लॉयज को कि सारे के सारे प्रोसेस जो है वो इम्प्रूवेबल है, नथिंग इज impossible. You can improve each and every process. So for that, you must aware the need and opportunity for improvement to your employee. The second point is to set a goal for improvement. You must set some certain standards in order to achieve your goal, and there must be a window for improvement of your set goals or required goals. The third one is organized to reach the goal. You must be organized. You must follow certain standard or procedures so that you can achieve your desired goal. Fourth, provide training. Obviously, you must, for achieving your goal, you must provide training. You must give education to your employees. You must teach them different statistical methods and techniques in order to produce a defect-free product. So you must provide training. Carry out project to solve problems. ठीक है, तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट करना है, क्विट नहीं करना, दिल नहीं हारना, और उनको सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसी तरीके से जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी जो है प्रोडक्ट में बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, और आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चीजें बस बनाते जाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, तो वन टाइम तो कस्टमर बाय कर लेता है, लेकिन फिर जो है वो कहता है कि जाहिर है इसमें ये मसले हैं तो इसको दोबारा बाय करने की जरूरत नहीं है। सो यू मस्ट कैरी आउट प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। The sixth point is report progress. You must report your progress to the top management, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट को प्रोग्रेस करें रिपोर्ट की क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है और कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही हैं, so that they must plan in order to remove deficiency from the system. Give recognition, give values to your employees, ठीक है ना, उनको सराहें, उनको वैल्यू दें ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आते हैं उसको कम्युनिकेट करें, वेदर इट इज गुड, वेदर दीज आर द गुड रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट। सो बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट you must view, or you must communicate your results to the higher authority so that they may take appropriate action. The ninth one is keep score. All the results that must be recorded well, and they must be scored. So based on these records are scored, you have to make
to maintain a momentum by making annual improvement part of the regular system and process of the company. तो जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसमें उसको देखते हुए आप अपने सिस्टम में फर्दर इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और यही आखिरी जो पॉइंट है कि मेंटेन मोमेंटम बाय मेकिंग एनुअल इंप्रूवमेंट पार्ट ऑफ रेगुलर सिस्टम। कि जो रेगुलर सिस्टम चल रहा है, रेगुलर जो प्रोडक्टिविटी या जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, उसमें आप इंप्रूवमेंट लेकर आए, ठीक है ना। न कि आप बस जो सिस्टम है जिस तरह चल रहा है उसको चलने दें, नहीं, हर साल में जो इम्प्रूवमेंट आती है उसको रेगुलर सिस्टम का हिस्सा बनाए, ठीक है ना, और उससे प्रोसेस को इम्प्रूव करें ताकि जो है कस्टमर सेटिस्फाई हो। The other philosophy that is represented by Crosby, that is known as Philip Crosby philosophy. Philip Bayard Crosby was a businessman and he authored an author who contributed to management theory and quality management practice. He is best known in relation to concept of zero defect and do it right first time. तो क्रॉसबे फिलिप क्रॉसबे का फलसफा भी यही था कि आप डू इट राइट फर्स्ट टाइम, के पहले ही टाइम पे जो है उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करें, ठीक है ना। तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गिव अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको जो इसका जो कंसेप्ट है फिलिप्स क्रॉसबे का, इसको हम जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। ही ऑथर्ड अ नंबर ऑफ बुक्स which entitled Quality is Free, is most popular, in which he stated that quality is free. It is not a gift but it is free. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि what cost money or the अनक्वालिटी थिंग्स, कि जो आप अनक्वालिटी थिंग्स लेते हैं, ठीक है ना, तो जो आपका खर्चा आता है वो इस अनक्वालिटी को इम्प्रूव करने में, उस पे जो खर्चा आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ, दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट। अगर इसको हम सादा अल्फाज में कहें कि ऑल द एक्शन दैट इन्वॉल्व्स नॉट डूइंग जॉब राइट फर्स्ट टाइम, कि कॉस्ट क्यों आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो इस वजह से आती है कि ऑल एक्शन दैट इन्वॉल्व नॉट डूइंग जॉब राइट द फर्स्ट टाइम, कि अगर वो फर्स्ट टाइम पे नहीं करता जॉब को ठीक तरीके से, ठीक है ना, तो फिर वो अगेन ट्राई करेगा, जाहिर उस पे वक्त भी जाया होगा, टाइम, बिजली, जो जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी। तो कॉस्ट हमेशा अनइक्वालिटी थिंग्स की बढ़ जाती है, ठीक है ना। His two books are Quality Without Tear and The Art of Getting Your Own Sweet Way are very popular. Four absolutes or four principles of quality management. Actually, the Crosby TQM approach is based on four principles of quality management. The first absolute or principle is quality is defined as conformance to the requirement. कि quality क्या है, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हु बहू वो उसको उस पे पूरा उतरती है कि नहीं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो चाहता है, आया प्रोडक्ट वही वो काम कर रहा है कि नहीं। द सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रॉब्लम्स आर फंक्शनल इन नेचर, के प्रॉब्लम्स जाहिर है हमेशा नेचर्स में प्रॉब्लम्स हमेशा ओरिजिनेट्स होती हैं और निकलती रहती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इस तरह का प्रोसेस नहीं है नेचर में कि दैट आर विदाउट प्रॉब्लम, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर problem to face. The third principle is there is no optimum level of defects. So इसका मतलब क्या है कि जाहिर है प्रॉब्लम्स आती हैं, इस आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आती हैं, ठीक है ना, तो उस डिफेक्ट्स का कोई एक ऑप्टिमम लेवल नहीं है जिसपे आप कहें कि बस ये अगर ये डिफेक्ट अगर उसमें आता भी है तो उसका अगर लेवल ये होगा तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है ना। सो देयर इज नो ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिफेक्ट। एंड द फोर्थ थिंग इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. The cost of fourth principle states that cost of quality is the only useful measurement, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो ही इंप्रूवमेंट को मेजर करने के लिए एक अहम टूल है। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से क्या मुराद है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप
किसी भी क्वालिटी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी इसकी उस पर कास्ट आती हो। इसको हम डिफाइन करते हैं मेथडोलॉजी दैट अलाउज an organization to determine the extent to which resources are used for activities that prevent पुअर क्वालिटी। कि पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो हम रिसोर्सेज और जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक्चुअली ये इस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ quality. That this cost of quality appraise the quality of organization, product or services that result from internal and external feature. ठीक है, ये आगे भी cost of quality डिटेल पे आ रहा है, इस पे हम बात करेंगे. So these are the basic four principles of quality management that is presented by Phillips Crosby. Like other philosophies, we have also different 14 points for management that is described by Crosby. Let's discuss each of them. The first one is management commitment. सो मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जाहिर है मैनेजमेंट अगर कमिटमेंट नहीं होगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव the system or in order to take the steps for the betterment of the organization or company, so quality cannot be achieved. So management commitment must be is first or priority step of the organization. The second one is quality improvement team. There must be a quality improvement team. ठीक है ना, जो कि आम जो यूजुअली जो काम हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, उसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम भी हो, जो कि हर एक डिपार्टमेंटल लेवल में उनका एक नुमाइंदा होता है, ठीक है ना, जो कि इनपुट्स देता है फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, और उस पर काफी सारी डिस्कशंस होती हैं और फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. सो दिस क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम मस्ट बी present in every organization. Quality measurement. By quality measurement we means that we have sufficient tech tools and techniques in order to judge or in order to measure the different variability in your product or process, so that we must be able to understand that how the process is going on, and in this way we measure the quality of the product. If the defects or variation is large, so definitely it will give you a poor quality products. And if deviations or variation in the product or processes are less, then you are going toward your required goal or quality or in producing quality product. Calculate the cost of quality. You must be able, every industry must be able to calculate the cost of quality. I again told you in the previous slide that by cost of quality means that it is a system that will help you in order to produce a quality product and to avoid the नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट. मीन्स कि एक सिस्टम है जिसमें आपके पास टेक्निक्स, टूल्स या मशीन्स जो भी रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो प्रोड्यूस करे ताकि वो एक पुअर क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स या प्रोडक्ट को बनाने से महफूज रखे, ठीक है ना. तो उसके लिए जो भी आपके पास फैसिलिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. सो मैनेजमेंट मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. रेज क्वालिटी अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉय, के एम्प्लॉयज को क्वालिटी की अवेयरनेस दी जाए कि व्हाट डज क्वालिटी मीन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप अपने एम्प्लॉयज को क्वालिटी अवेयरनेस उनमें रेस करोगे, ठीक है ना, डेफिनेटली तो वो जो है वो उस पे अमल करके जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है. इंस्टिगेट द करेक्टिव एक्शन. Take the corrective action whenever you get the results from the customer feedbacks. So you must take the corrective action in order to eliminate the defects, or you can see कि उसमें जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको रिमूव करने के लिए आप उसको करेक्टिव एक्शन लें. अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर्स विल नॉट बाय द प्रोडक्ट अगेन from your organization. Monitor
प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्टेब्लिश अ जीरो डिफेक्ट कमेटी। जाहिर है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए या मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है उसको मॉनिटर करें, और उसके लिए आपको एक जीरो डिफेक्ट कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, जो कि वो आपके जितने भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर सके और उसमें फर्दर जो है वो चांसेस ऑफ एरर को एलिमिनेट करें एंड थस क्रिएटिंग अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। ट्रेन सुपरवाइजर इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वही बात है कि आप अपने सुपरवाइजर्स को क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ट्रेन करें, क्योंकि जाहिर है हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक सेक्शन का एक सुपरवाइजर होता है जो कि सुपरवाइज करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ देयर वर्कर्स। ठीक है ना, तो सुपरवाइजर का ट्रेन होना बहुत जरूरी है। जब सुपरवाइजर को सारी टेक्निक्स और प्रोसेसेस मालूम होंगे और आप उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ट्रेन करोगे, डेफिनेटली ही विल ट्रांसफर द नॉलेज टू द लोअर लेवल वर्कर, एंड hence the system will go toward the improvement. हाँ, ये जो फिलिप्स क्रॉस बे है, ये कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ जीरो डिफेक्ट डे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक जीरो डिफेक्ट डे मनाया जाए, जिस तरह हर एक दुनिया में हर एक चीज के लिए एक आलमी दिन मनाया जाता है, तो इस तरह जीरो डिफेक्ट के डे भी मनाया जाए। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि टू अगेन टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी in our daily life, या in to show the importance of quality within an organization. Encouraging employee to create quality improvement goal. अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करे कि जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स गोल को इम्प्रूव भी करे और क्रिएट्स भी करें। ठीक है ना, एरर काजेज रिमूवल, जो प्रोसेसेस वो सर्विसेज या वो एक्ट्स जो कि हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू इनिशिएट एनी एरर, दे मस्ट बी रिमूव। ठीक है ना, आप उन ऐसी प्रोसेसेस को, ऐसी चीजों को कोशिश करें रिमूव करें जो कि एरर को जन्म देती हैं एक किस्म की। तो वो किस तरह आप कर सकते हैं? वो जाहिर है वो आप उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करती हैं कि ये एरर जो है वो इस वजह से है। तो बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन यू कैन remove these causes that tend toward this error. The 12th one is recognize participant efforts, के जो पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक, ठीक है, जो भी इन्वॉल्व हैं इन कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यू मस्ट रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। क्या होता है इससे, क्या फायदा होता है कि जब आप उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनका सीना जो है वो और भी चौड़ा हो जाता है, और वो जो और कोशिशें करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें और फर्दर बेहतरी लाए। ठीक है ना, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप उसको उस पे अमल करते हो तो वो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्रिएट क्वालिटी काउंसिल्स। अच्छा, अब क्वालिटी काउंसिल से क्या मुराद है? क्वालिटी काउंसिल से मुराद एक काउंसिल है जिसमें आपके डिपार्टमेंट्स के हर डिपार्टमेंट का एक एक नुमाइंदा मौजूद हो, जिसमें डिजाइन से लेके प्रोसेसिंग से लेके कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टिल द एंड तक जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से आप एक एक बंदा लें। ठीक है ना, और वो एक उसकी एक यूनियन बनाए, एक काउंसिल। ठीक है ना, तो जिसमें वो सारे के सारे जो है अपने अपने डिपार्टमेंटल लेवल की इंफॉर्मेशंस और जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। ठीक है ना, और वो डिस्कशन की बेस पे जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करें। ठीक है ना, और वो इम्प्रूवमेंट जो है वो फिर फर्दर इम्प्लीमेंट हो। तो क्वालिटी काउंसिल्स आगे भी शायद अगर किसी टॉपिक में आता है, मेरे ख्याल से आएगा, तो उसको हम फिर वहां पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जिस तरह हर एक कौंसल होती है, अक़वाम मुत्तहिदा कौंसल, जिसमें आप देखें कि सारे ममालिक जो है उनके सरबराहान उसके मेंबर्स होते हैं और वो वहाँ पे डिस्कशन होती है और फिर एक लाएअमल पे लाएअमल तय होता है और फिर अहद किया जाता है कि हम इसके ऊपर ही काम करेंगे ताकि अपने ममालिक में जो है वो बेहतरी आ सके, ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। इसी तरह जिस तरह क्वालिटी काउंसिल का भी मकसद ये है कि सारे फंक्शन डिपार्टमेंटल्स के जो अफराद हैं वो इकट्ठे हों, वो डिबेट करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपनी
कोशिशें लाएं, ठीक है। डू इट ओवर अगेन, और ये सारी की सारी चीजें आप इसको बार बार करें ताकि जो है वो आप इसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकें। Okay, that was our first part of this lecture. You can say that was is our third lecture. Uh, this is the second A lecture. Okay, if you have any question, you can ask me. After some time, I will try to record the part B of this lecture and part C as well. Again, if you have any question, you can ask me through WhatsApp group or in Google Classroom. Thank you for your time.